अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की एक अहम बैठक हुई है। बैठक में दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बताते हुए रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने आतंकवाद और मिडिल के मौजूदा संकट समेत कई वैश्विक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के हित समान हैं, लेकिन चुनौतियां भी साझा हैं। इनमें सबसे बड़ी साझा चुनौती आतंकवाद है। Now, as regards this visit and our discussions today and yesterday, let me give you a state of play. In terms of the political understanding between India and the United States, I think we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. Yesterday, during the Secretary's call on the Prime Minister, some global and regional issues were discussed, and in our subsequent meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia. I also shared with him some impressions I had of my recent visit to the Caribbean. And our talks today over lunch will focus on the latest developments in the Gulf. As you all know, a few things have happened or seem to be happening overnight, and also on the Ukraine conflict.